Hello G, welcome back. Another day in the gym, or for those who don't know me, my name is Rizwan and I post content about workout, gym, fitness, lifestyle, etc. और आज हम लोग के एजेंडा में है to be working on our core, which is abs. और हम हमारे पहले तो I'll explain why we do it, then I'll explain what exercise can you do for your core, or also why it's such an important part of working out, because I feel like majority जो होती है जो वर्कआउट करते हैं लोग वो इसको स्किप मारते हैं बिकॉज पीपल जस्ट ओवरलुक इट थिंकिंग कि हाँ भाई बस ये खुद ही हो जाएगा. सही है. सो आई guide you with how you can improve your own self if you're watching this, or I hope I can provide some value to those watching. So I guess let's first talk about why should you be working out on your core. Chalo, let's explain it like this because कहते हैं ना abs are made in the kitchen. 100% that's true. लेकिन होता क्या है कि आपके एब्स पे भी एक तो इट्स अ फैक्ट 100% आपका फैट कम होगा तो दे विल बी मोर प्रोमिनेंट मोर विजिबल राइट. बट फैट के नीचे आपका यहाँ पे भी मसल है. तो जैसे आपका चेस्ट होता है, बैक होती है, शोल्डर्स होते हैं, बाइसेप, ट्राइसेप एटसेट्रा. जैसे वी वर्क आउट ऑन देम बिकॉज वी नीड द मसल टू ग्रो. Likewise, आपके abs पे भी you have your muscles. So these are abdominals. So internal oblique यहाँ पे ये obliques होते हैं. Internal, external oblique. These are your abdominal muscles. और इसमें हमारी upper abs होती हैं, lower abs होती हैं. The different exercises for both. और इन muscles को जब हम work करते हैं, when we give a specific day to it, or if you provide some importance to your abs by working on them, तो फिर क्या होता है कि आपका मसल इसके नीचे डेवलप होने शुरू हो जाता है. So when the muscle starts forming up and you are also looking at your diet, तो आपकी दोनों चीज़ें साथ साथ कंपाउंड कर रही होती हैं. तो आपका मसल भी वर्क आप इम्प्रूव कर रहे हो, फैट भी कम हो रहा है. what will that do is कि आपका एब्स ज़्यादा जल्दी विजिबल होंगी. एंड आई फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैं खुद भी वन ऑफ दोज हूँ. आई हैव टू एडमिट कि मैं बहुत टाइम एब्स को जस्ट स्किप मार देता था बिकॉज आई वुड थिंक कि हाँ भाई इट्स नॉट बीइंग विजिबल, तो खुद ही आप खाना कम करोगे खुद ही आ जाएंगी एज लॉन्ग एज यू वर्किंग आउट ऑन योर रेस्ट ऑफ योर बॉडी. तो for this very reason I feel like it's a must. 100% it's a must के जैसे लेग स्किप कभी नहीं करना चाहिए. बाकी मसल्स आई थिंक मेजॉरिटी स्किप करती नहीं है, बट बॉयज आई थिंक अ लॉट ऑफ बॉयज skip legs. I think a lot of boys skip core, and both of these are a very big muscle group, which I think if you don't work out, you can never see your results on them. सही है. So that was my 2 cents on why you should work out on your abs, and now I'll explain what we can do and what sort of exercises we can do for making them more prominent. मैं किसी भी एक्सरसाइज से पहले डिस्क्लेमर अपने रोटेटर कफ की वार्म अप करता हूँ बिकॉज ऑफ माय शोल्डर इंजरी. और टू बिगिन विद वी विल डू हैंगिंग नी रेजेस. सही है. एंड दिस वर्क्स ऑन योर एब्डोमिनल्स बोथ द अपर एंड लोअर वंस, नॉट सो मच ऑन द लोअर, लेकिन अपर और लोअर दोनों पे वर्क करता है. ठीक है. सो व्हाट डू you just use your hands, your knees straight, back straight like this. और हम इसमें क्या करेंगे, विल डू 3 sets of about like 10 reps each. We are done with our first exercise which was hanging knee raises, and अब हम हमारी second exercise करेंगे which will be 90 degree ab crunches. और
You can use a bench, a ball, a chair, whatever suits you, to keep your feet in 90 degrees, and you'll be lying down flat on the floor. हमारे हाथ हमारे सर के पीछे होंगे, behind the head, and you'll do ab crunches. And again, 3 sets, around 10 reps each. So for this exercise, you can use whatever suits you. I'm gonna go with this ball, and what we do is you keep our feet in 90 degrees. I don't know if you can see me, or you have to have your your hands behind your head, और हमने क्रंचेस करने हैं, ठीक है. So don't worry कि पूरा नहीं हो रहा, थोड़ा हो रहा है. However you can do it, just try to go all the way, लेकिन जितना भी होता है it's fine. And 3 sets, 10 reps each. For our next exercise, we will be doing lying down leg raises. अब इसमें दो options हैं. Either we could do a straight bench or a decline. I prefer a decline because I feel like इसमें आपकी थोड़ा range of motion बढ़ जाता है. And this exercise in particular is for your lower abs. कहते हैं ना नीचे फैट है, नीचे कम नहीं हो रहा, नीचे के लिए मैं क्या करूँ. For your lower pouch, lower abdominals, this is the exercise to do. सही है. So again we'll do 3 sets या 4 sets, जो भी आपका दिल चाहता है, however you're comfortable. I generally like to do 3 to 4 sets of each exercise and 10 reps each set. तो इसमें करना क्या है कि you have to hold on to something and then your feet should be straight, or you have to go all the way down and then all the way up. सही है. I'll show you one set and then repeat that for as many times as you can. सही है. So I'm lying down, my legs have to be straight. Our next exercise will be standing toe touch, alternate hands. So if you're doing it like just to begin with, आप अपने हाथ से भी कर सकते हो, and this helps with your obliques. You can do it standing, you can do it lying down. A lot of people also do it lying down, अपने पाँव fold करके, and then they do this, whatever suits you. I like to do a weighted one because मुझे लगता है मैं अपने हर मसल को थोड़ा weight से push करता हूँ, तो I feel like they respond better. Whatever works for you. अगर आप start कर रहे हो तो आप मसल weight के बगैर भी effect पे डाल सकते हो. सही है. And I'll be using the 15 kgs for both sides. Again, 3 sets of about 8 to 10 reps each, alternate side, and this is how you do it, arms straight. We're done with our alternate toe touches, और अब हम करेंगे ab crunches but weighted. सही है. So this is again not your beginner exercise, but I would 100% recommend it क्योंकि इसमें आपके abs को आप बहुत अच्छे strain में डालते हो. सही है. I really like it, but do it once you have done all the basics. Don't do it from the get-go because if you're just starting off, तो आप एक दफ़ा extreme कर देते हो ना, you never go all the way extreme from the start.
you build your stamina, your potential, and your ability to do something over time. सही है? So I'll just show you again 3 sets, 8 to 10 reps each. I'll be using this rope और हम लोग controlled movement करेंगे. It's not a difficult exercise, but I would say just do it once you know how to do the basics. क्योंकि उससे पहले करना is just you're not doing yourself good. So we sit down on our knees and you let your arms go on top and then you pull them all the way inside अपने abs की तरफ. सही है? Okay, so we're almost done और हमारी last exercise है. And for our last exercise, we're gonna do basics plank. But if you ask me, मेरे ख्याल में basic exercise ही ये सबसे मुश्किल exercise है. And you'll try to hold on to each plank for about a minute. और उसी तरह हम लोग करेंगे 3 to 4 sets. And you have to have your back straight, your arms as close to the body as possible. और हमने कोशिश करनी कि 1 मिनट करें, but it's fine if you can't do it also. Try your best to hold on to the plank for 1 minute. ठीक है? So how you do it is very basic. आप अपने arms यूं bend करोगे, you lift your legs back straight and then you just hold on to it and अपना muscle engage करना चाहिए. So feel your abs while you're in this position. And if आप सिर्फ तब ज़्यादा फील करोगे जब आपकी बैक स्ट्रेट होगी, लेग स्ट्रेट होंगी. एंड हर बॉडी एक्सरसाइज में मसल फील करते हैं. ओनली देन you engage with formation of the muscle. So that was it for today. आज का एपिसोड था all about abs and why we should do it और हम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं to develop our abdominal muscles. Again, मेरा ओपिनियन यही है कि मेरा एडवाइस इस वजह से मैं देना चाह रहा हूँ because I've been working out for like a good 13-14 years now or I give my 2 cents from my experiences and what worked for me, and I hope that whatever I say or whatever I show is helpful to anyone who's watching क्योंकि at the end of the day I'm just trying to have fun and explain things that I enjoy doing. Or if you guys like the video, give it a thumbs up. I'll be very happy. और मिलते हैं इंशाल्लाह in the next episode with something else, something new. I'll try to keep you guys engaged. Do comment. Honestly, अगर कुछ बुरा भी लग रहा है, कुछ advice देना है, you want me to bring some new information for you to whoever is watching, please do let me know. I got a comment about leg exercises, so next video I'll show you
how and what you can do for your legs. Or till then, Allah Hafiz, see you again.